Hello kids, welcome back to e-classes. Today we are going to learn computer exercise from parts of computer. This is our third part. Today we are going to do the exercise. Now question number 1, identify and write the names of the following parts of a computer. So first is mouse. तो आपको यहाँ पे mouse की spelling लिखना है और book में आप लिखिए, okay? CPU, so CPU, this is CPU, you write CPU. Then it is monitor, so write the spelling of monitor, M-O-N-I-T-O-R. Now the next one is picture of keyboard, so write here keyboard, K-E-Y-B-O-A-R-D, keyboard. Now second question, this is fill in the blanks. You have to, from the blanks you have to write the correct answer. Dash is the brain of a computer. A brain of computer कौन है? Mouse, keyboard या CPU? The correct answer is CPU. Second, dash has A to Z switches. A to Z switches किस पे होते हैं? Monitor, keyboard या CPU? So answer is keyboard. Moving dash moves the arrow on a monitor. So किसको move करने से arrow monitor का move होता है? Mouse को. तो आंसर है mouse. A computer is an dash device. Computer कौन सा device है? Electronic है, virtual है क्या natural है? So the answer is electronic device. A mouse is connected with a dash. Mouse किससे connect होता है? CPU, monitor या keyboard? The answer is CPU. Now this is page number 22. Third question. You have to say right or wrong and you have to write in your book. The output given by a computer is seen on the keyboard. That is wrong. The mouse is shown with an arrow on the computer. That is also wrong. A CPU works like a human brain. That is right. There are two main parts in a computer. So this is also wrong. A computer is an electronic device. Children, it is right or wrong? Correct. It is right. The keyboard should be cleaned with water. Wrong. Keyboard को हम पानी से clean नहीं कर सकते. A pen drive is used to store data. That is right. A keyboard is connected to monitor. Wrong. A mouse is also known as pointing device. So right. The device that processes the data is known as storage device. Wrong. Now match A with B. Question number 4. हमें मैच द फॉलोइंग करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में ए में लिखा हो सब पिक्चर्स बने हुए हैं, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, सीपीयू, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी में सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर. इस बॉक्स के अंदर हमें करेक्ट आंसर डालना है. तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज दैट? मॉनिटर और कीबोर्ड? इट इज मॉनिटर. राइट द आंसर मॉनिटर. सेकेंड वन इज माउस. थर्ड इज keyboard. And fourth one is CPU. Now we have to write the answers of these questions. So first is write the names of the main parts of a computer. Now you know what is the main parts of a computer. So answer is monitor, CPU, keyboard and mouse. So you have to write in your book monitor, CPU, keyboard and mouse. Now what is a monitor? Monitor क्या है? इसका आंसर है the monitor is an output device. The monitor is an output device. Third is what is the full form of CPU? CPU का full form क्या है? That is Central Processing Unit. Central Processing Unit. Now fourth, what is the use of a keyboard? The keyboard is used to enter data into a computer. Keyboard से हम
डेटा एंटर करते हैं। तो आंसर क्या है? द कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। ये PDF में भी लिखा हुआ है, तो आप उसमें से भी कॉपी कर सकते हैं अच्छे से। नाउ आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। आई एम लाइक अ टीवी। टीवी जैसा क्या होता है? मॉनिटर। तो हम ये आंसर लिखेंगे मॉनिटर। आई वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन कौन वर्क करता है? CPU। आई एम यूज टू एंटर डेटा इन अ कीबोर्ड। डेटा किसके थ्रू एंटर होता है हमारा? कीबोर्ड के थ्रू। सो मूविंग मी मूव्स द एरो। अगर आप किसको मूव करते हैं तो एरो मूव होता है? माउस। सो आई प्रोसेस द गिवन डेटा। आई प्रोसेस द गिवन डेटा, तो CPU। I store the data in a computer storage device. I must be used on a flat surface. तो flat surface पे किसको रखते हैं? Mouse. So this is our exercise.